So let's see, today's topic is convexity. See, let me tell you something about convexity and duration. See, if you want to measure the sensitivity in bond price, that means sensitivity is nothing but the changes in bond price due to certain factors, that is due to interest rates. That means अगर interest rate ज्यादा होते हैं या कम होते हैं तो आपका bond price कैसे, bond price के ऊपर क्या impact होता है, that is nothing but sensitivity. Sensitivity has been measured by duration. ड्यूरेशन में आपने मैक्यूलर ड्यूरेशन देखा जो ईयर्स के हिसाब से आपको बताता है कि द हायर द मोर द ड्यूरेशन, द मोर द पीरियड यू होल्ड द बॉन्ड, द मोर द interest rate risk you will bear, the less the duration, the less the risk. Then we had a modified duration which said 1% change in YTM, okay, that means 1% increment in YTM will decrease your bond price by some X percent, and 1% decrease in YTM will increase your bond price with some X percent. That's what we studied. Third was money duration. I'm giving a small revision of this. It says 1% change in your YTM will decrease your bond price with some X dollars, and 1% decrease in YTM will increase your bond price with some X dollars. In that, we also saw PBVP. So what did that PBVP says? That is 1 basis point change in yield to maturity decreases your bond price with some X dollars. 1 basis point decrease in your yield to maturity increases your bond price with some X dollars. ये सब हम देख चुके हैं. And apart from this, सिर्फ एक चीज और देखना है, that is convexity. So we have seen that the sensitivity is measured with duration, and duration is a linear measure. लीनियर मेजर का मतलब है कि जब 2% YTM, अगर 1% YTM चेंज होता है तो आपका बॉन्ड का प्राइस सम लाइक 3% से इंक्रीज हो रहा है. ओके, एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम आपको एक लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिलेगा. But that I have already explained you about the linear relationship in my previous class. Linear relationship is not the one which can easily capture the sensitivity in the bond price due to interest rate changes, because there is curvature that we have already seen in the graph. मैंने आपको पहले बताया था कि एक curvature form होता है. So we have already seen that there is a curvature, and this is what is the actual price yield curve. So this is the one which we have already ignored, and this has to be considered for in fact capturing the actual change in the bond price with respect to change in its yield to maturity. And ये ग्राफ को देखने पे आपको क्या लग रहा है? When yield to maturity is increasing at an increasing rate, the bond value is decreasing at a डिक्रीजिंग रेट. यानी यहां पर आप बहुत बहुत ही कम देखते हो स्पेस, यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है लेकिन यहां बहुत कम हो रहा है. एंड व्हेन यील्ड टू मैच्योरिटी डिक्रीजेस, द बॉन्ड प्राइस increases at a increasing rate. Okay, so now we will derive this and we will understand the convexity very properly.
So if I have to say bond sensitivity, if you want to measure, that is nothing but a combination of duration and convexity. Both of this have to be considered to study the bond sensitivity. Okay, and duration is a linear measure. That means it's a first derivative. सपोज आपके सामने एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है 3x² + 5x + 9. दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कभी भी कर्वेचर होता है. सो कर्वेचर इज कॉन्वेक्सिटी. इसका d/dx करो 3x² + 5x + 9, you will get 6x + 5. दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज ड्यूरेशन. यानी ड्यूरेशन एक स्ट्रेट लाइन है, कॉन्वेक्सिटी एक कर्वेचर है. कभी भी कोई भी कर्व जो होता है वो इसी फॉर्म में उसका एक्सप्रेशन दिखने को मिलता है, और स्ट्रेट लाइन का एक्सप्रेशन कभी भी ये फॉर्म में देखने को मिलता है. फाइन, लेट्स मूव फॉरवर्ड. So now, so if I write a point here that convexity is a friend of an investor or a bondholder, it will not be a wrong notion. But why? It means convexity is something which is protecting the bondholder. We'll see, we'll derive it. So what happens when the yield to maturity increases? Okay, that time the bond price decreases. Definitely the bond price decreases, but due to convexity, it would decrease less. That we have seen already. When yield to maturity increases, the bond price decreases, but at decreasing rate, it would decrease less. So when the yield in the market decreases, bond price will increase. Because of convexity, the bond price will increase more. So point number 2, when yield to maturity decreases, bond price will increase, but due to convexity, it would increase more. That is what is convexity all about. ड्यूरेशन क्या बताता है? अगर आप yield to maturity बढ़ा तो बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा, yield to maturity गिरा तो बॉन्ड प्राइस गिरेगा. बट एग्जैक्टली बताता है इतने परसेंट, for 2% change in yield to maturity, the bond price is increasing by 4%. For 4% yield change in yield to maturity, bond price is increasing by 8%. यानी exactly fixed changes बताएगा. But if you say for 2% change in yield to maturity and 4% yield to maturity, you are able to say the relationship. But what happens if the yield to maturity increases at a very high rate? That means at 10%. Okay, पहले क्या था? 2% पे 4% आपका बॉन्ड प्राइस, अगर ये इंक्रीज हुआ तो ये डिक्रीज हुआ, अगर ये इंक्रीज हुआ तो ये डिक्रीज हुआ. बट अगर 2% यील्ड टू मैच्योरिटी इंक्रीज होता है एंड आपका फिर नेक्स्ट यील्ड टू मैच्योरिटी 10% से इंक्रीज होता है, अ वेरी वेरी बिग चेंज, अ हाई चेंज, देन व्हाट विल बी द आंसर? ड्यूरेशन कैन नॉट से, दैट विल बी सेड बाय convexity. That means if the changes in the yield to maturity is very large, that means a very high or very big change, then the answer of bonds sensitivity, bond price sensitivity can be captured with the help of convexity. Okay, यानी अगर बड़ा चेंज होगा तो convexity से ही हम लोग मेजर कर सकते हैं. So let's see what is happening here. So let's take an example. Face value of the bond 1000, coupon 10%,
30 years is the maturity. Okay, so yield to maturity we are seeing, and we are seeing the bond price, how this is changing. Okay, so let's see. If the yield to maturity is 5%, the bond price is, let's say, 1768.62. 6%, the bond price is decreasing, 1550.59. If it is 7%, the bond price is decreasing, 1372.27. 8%, 9%, this is the data I've just taken out from somewhere, some text. 10%, 1000. So at 10% it is 1000. You are seeing here. 11%, 913.06. 12%, 838.90. 13%, it is like 775.13. Then I'm just writing here. 14%, 719.89. 15%, it is 671.70. And then again 16%, it is 629.37. तो ये आपके सामने पूरा एक डेटा है. Let's make a small curve regarding this. That means let me frame this on a graph. Okay, so I'll take YTM on the x-axis. I'll take bond price on the y-axis, and let me take this yield to maturity here. So I'll go ahead with this like 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, 12%, 14%, 16%. Fine. And the prices, let's take like 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000. So these are the prices. Now let's frame this. So what do you say? 5% पे कितना है यहाँ पर अपना प्राइस? 1768. So 5% यहाँ पर रहेगा, 1768 आपका यहाँ पर आ जाएगा, somewhere here. अच्छा, 6% पे 1550 है. 6% पे exactly आपका 1550 आएगा. 1550 यहाँ पर आ जाएगा. 7% पे आपको 1372. 7% is here. आपका ऐसा बनेगा. ठीक है, 1372 मेरे हिसाब से थोड़ा इधर आना चाहिए. फाइन. एंड देन 7% पे हो गया, 8% पे 1225, इधर आना चाहिए. देन 9% आपका जो है दैट इज बिलो 10, 1102, थोड़ा सा इधर आना चाहिए. एंड आपका 10% पे एग्जैक्टली 1000. 11% पे आपका जो है 913 एंड 838. 913, 838 ऐसा करके आ रहा है. तो इफ यू सी इट विल बी लाइक अ कर्व फॉर्मिंग. ऐसा एक कर्व आएगा आपको. एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगा, कर्व आएगा. ठीक है, तो चलो हम लोग ये एक कर्वेचर तो बन गया है. नाउ लेट अस डिफाइन आर कॉन्वेक्सिटी. फाइन. ये छोटा सा आपको एक यील्ड कर्व मैंने बताया. वी विल नॉट टेक द एंटायर डेटा, विल जस्ट टेक 2 डेटा एंड ट्राई टू फाइंड आउट convexity, and with the help of formula try to prove what is happening, because convexity also has a formula. So let's take a small graph. Small graph है. यहाँ पर आपका yield to maturity 10% है, 9% है, 11%. Okay, and this is $1000, and you know for 10% it is $1000. I have already given that. Okay, and if I take this, अगर मैं 11% पे बताऊं, तो चलो एक लाइन बना देते हैं. यहाँ पर लाइन बनते हैं, स्ट्रेट लाइन. ओके, सो ये इधर पर आना चाहिए एग्जैक्टली. ओके, और ये इधर पे आना चाहिए एग्जैक्टली, अगर लीनियर रिलेशनशिप की बात करते हैं. बट यू नो व्हेन वी ड्रू द ग्राफ, it is not coming like that. It is coming as a curvature, and this is definitely convex. Okay, this is a convex curve,
towards the origin and it is tangential to the duration line. Fine. So what are we seeing here? What are we seeing here? So we are seeing here convexity. So instead of coming to be straight line, the relationship came out to be curvature. Fine. So at 10%, the bond price was 1000. At 10%, the bond price was 1000. At 11%, the bond line is telling the bond price to be, see, at 11%, the bond line is telling the bond price to be this one. Correct? Correct? But actually, the bond price is up, that it is here actually on the curve. Actually, में 11% के हिसाब से यहाँ आना चाहिए आपको, because we have already seen that it is a curvature. इधर आना चाहिए आपको, but duration में क्या बता रहा है? इधर आ रहा है. Okay, actually में इधर आना चाहिए. And for 9%, it is showing here. Okay, I'll just put a circle, but actually it should be here. It should be here as per the curve. Okay, it should be here as per the curve. Fine. So what are we showing here? We are showing that due to convexity, when the yield is decreasing at 9%, due to convexity, when the yield is decreasing at 9%, okay, the bond price is increasing more. The bond price is increasing more. See, it should be here. The bond price should be here. That means it should be somewhere here, some value. Okay. So because of the convexity, when the yield to maturity is decreasing, the bond price is increasing more. Fine. And when the yield to maturity is increasing, when the yield to maturity is increasing from 10 to 11, what is happening? The price should be here, boss. The price should be here. Actually, because of duration, the price should be here at this point. Okay, at this point, but because of convexity, the price should be at here. Okay, so what I can say, when the yield to maturity is increasing, the bond price is decreasing less. Okay, when the yield to maturity is decreasing, that is from 10 to 9, the bond price, because of convexity, is increasing more. When yield to maturity is decreasing from 10% to 9% due to convexity, the bond price is increasing more. And when yield to maturity is increasing from 10% to 11% due to convexity, the bond price is what? Decreasing. Decreasing, sir. When yield to maturity is decreasing. Yeah, decreasing only. So it will be from decreasing what? Square. Decreasing what? Decreasing more less. आप यहाँ देखो सर, अगर ये प्राइस एक्चुअली में 1100 होना चाहिए फॉर एग्जांपल, बट यहाँ पर आपको 1500 आ रहा है. करेक्ट हो गया ड्यू टू मोर या फॉर एग्जांपल. और एक्चुअली में ये प्राइस आपका लाइक 600 होना चाहिए, बट कितना आ रहा है? 800. तो आप देख सकते हो कॉन्वेक्सिटी के वजह से दैट इज ओनली पॉसिबल. ओके, चल वी मूव फॉरवर्ड. शिवांग, क्लियर हुआ? हाँ सर. हाँ, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? ये कर्व, दिस कर्वेचर रिलेशनशिप इज हेल्पिंग द बॉन्ड होल्डर और नॉट? द कर्वेचर रिलेशनशिप is helping the bond holder or not? Yes, it is helping. Definitely it is helping. Okay, because the bond holder is benefiting when the yield increases, the bond price decreases, but it decreases less. And when the yield decreases, the bond price increases, it increases more. तो इसके लिए बहुत बड़ा फायदा है. ओके, अब ये सब आपको कॉन्सेप्चुअली समझाना था. Now let us enter to the formula and prove this fact clearly. Okay, and wind up. Now how to calculate convexity? कैसे कैलकुलेट करना है? So convexity is equal to
V minus plus V plus minus 2V naught. You already know what I'm writing. You can write P in place of V. It's your wish. So now you can see here, यहाँ पर y square आ रहा है. Are you seeing this point? I said you Yes. na, second order derivative. Convexity is a curvature. Yeah. That's right. Second order, right. अब चलो एक पॉइंट ले लो, यहाँ पर एक पॉइंट ले लो. ओके, सो लेट्स से at 9%, 10% and 11%. Okay, bond price was how much at 10%? 1000. Okay, at 9%, let's say the bond price is like 1102, because when yield to maturity decreases, the bond price increases. Okay, so यहाँ पर yield to maturity कम हुआ है तो मैं माइनस में लगा दूंगा, and when the yield to maturity increases, the bond price decreases. 930 plus. ठीक है, so let's put that into the formula and find out the convexity. Can you do that for me, please? Okay, I'll just do it. 1102 minus 913 minus 2000, that's the initial value, 2 into 1000 into 1% the whole square. Can you tell me what is the number you are getting here? सर आपने -913 क्यों लिया है सर? माइनस प्लस लेना है ना? हाँ, सॉरी. ओके, हाँ, अब कैलकुलेट करिए. $15. 15 by 2000. यस, 15 by 2000 सर. 15 by 2 नहीं, इसका आंसर कुछ आएगा, आपको 75 कुछ आना चाहिए. 75 आएगा, कैलकुलेट करके देखो. फाइन. सो नाउ द कॉन्वेक्सिटी इज 75. फाइन. नाउ सपोज अभी आप लोग को मैंने इतना सब कुछ बताया. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस ना. फाइन. सो सपोज the scenario is not curve. Okay, the scenario is not curve, for example, and it is just a straight line. अभी आप लोग ड्यूरेशन, कॉन्वेक्सिटी, ये सब का बहुत दिमाग खराब हो रहा है ना. अब कंफ्यूजन पूरा कम हो जाएगा आपका. कैसे, देखो. imagine a scenario, it is not a curve. सर 0.75% आया है. हाँ, 0.75 को अगर आप नॉर्मल एक नंबर रखे तो 75 समझ लो. ठीक है ना. 0.75% है ना. 0.75%, yes. हाँ, ओके. ओके, फाइन. 0.75. अब नेक्स्ट पॉइंट देखो कि अगर ये कर्व नहीं है. इमेजिन अ सिनेरियो, इट्स नॉट अ कर्व, इट्स अ स्ट्रेट लाइन. ओके, सो सपोज इट्स अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज आई एम स्पीकिंग अबाउट ड्यूरेशन. सो व्हाट वुड बी इन दी सिनेरियो? सो अगर स्ट्रेट लाइन होता तो सिनेरियो क्या होता? हैड इट बीन अ स्ट्रेट लाइन फॉर 9%, 1100, करेक्ट. अगर यील्ड टू मैच्योरिटी आपका 10% पे आपका बॉन्ड प्राइस कितना है? 1000, करेक्ट. So with the 1% decrease in yield to maturity, the bond price is increasing by 100 rupees, correct? And for 1% increase in yield to maturity, the bond price is decreasing by 100 rupees, correct? Is it showing a higher or lesser change? No, exact change, correct or wrong? Exact. Yes. अगर आप उसके ऊपर आओ अपने ग्राफ के ऊपर, तो आपको एग्जैक्टली मालूम चलेगा लीनियर रिलेशनशिप बन रहा है. ओके, Yeah. and I will prove this in the formula right now. So here it's a perfect linear relationship. Fine. Now let's put here 1100 in the formula plus 900 minus 2000 divided by 2 into 1000. Okay,
So what will you get? I'm not moving forward. I'm not at all moving forward. It is unnecessary and कोई जरूरत भी नहीं है, because here you can see numerator it is coming to 1000. 0. Correct? So convexity is what? 0. So when there is a linear relationship, there is no convexity, right? So it's a straight relationship. But here what has happened, please understand. अभी यहाँ पर ये conclusion point आ गया, finish होने को आ गया concept. With 9% with 1% decrease in the yield, the bond price has increased by 100 rupees. With 1% increase in yield, the bond price has decreased by 100 rupees. But in case of convexity, what has happened? With 1% decrease in yield, the bond price has increased by 1102. That means it increased, but it increased more, correct? By $2. Correct or wrong? Yeah. यही है ना, मैं पॉइंट बता रहा हूं आपको. And when the yield to maturity increase, the bond price decreased by less to 913. More. It see, with increase it increased more, and with decrease it decreased less. $13 less. मतलब इतने से आपका कम, यानी अगर 900 होता तो बहुत ज्यादा डिक्रीज होता, $13 तक का आपको डिक्रीज कम हुआ है, ठीक है ना. सो दैट इज व्हाट ओनली वाज द पॉइंट हियर. आपको कॉन्वेक्सिटी कैसे फायदा पहुंचा रहा है. फाइन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट. सो अगर अभी हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, 1102 एंड हाँ 913 माइनस 2000 ये करके हमने ये सब डिस्कस किया था अभी, एंड वी गॉट अ पॉजिटिव नंबर देयर. फाइन. सो आपको कितना आया? 75 समथिंग आया ना. दैट इज 15 बाई समथिंग आया. 15 बाई 2 आया. 15 by 0.2. और कितना आया? 0.75 आया ना. नहीं 15 by 0.2 था. that was 75. 15 by 0.2. 15 बाई 0.2 आया. ठीक है. तो आपको 15 by 2000 वो परसेंटेज में है ना. ठीक है. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रहने दो. थोड़ा ऊपर जाइए सर. हाँ थोड़ा और ऊपर. हाँ तो 2 into 1000 हो गया, into 1% square is 1%, 1 only. ठीक है, कोई बात नहीं. बस अपना जो कॉन्वेक्सिटी का कॉन्सेप्ट है वो इधर तक ही फिनिश हो चुका है. यानी अगर आपका बढ़ेगा तो आपको लाइक कम बढ़ेगा या ज्यादा होगा, बस उतना ही है कॉन्सेप्ट, उतना ही है कॉन्वेक्सिटी का. देयर इज नथिंग मोर देन दिस. So that means if there is a 1% increment, there will be a like less decrease, and like 1% decrease, there will be a higher increase. That's it. Okay. चलो अभी ये पॉइंट्स तो क्लियर हो गए. नेक्स्ट पॉइंट डेरिवेटिव्स पे जाते हैं. लेट्स गो. हेलो, हो गया क्या ये? हाँ ये हो गया सर. कॉन्वेक्सिटी उतना ही है और क्या है उसमें. ये प्राइस फंक्शन ऑफ कॉलेबल वर्सेस ऑप्शन फ्री बॉन्ड हम प्रीवियसली किए क्या इस पे? कर दिए ना सर कॉलेबल, और उसमें मतलब वो आप बॉन्ड के इन प्लेस ऑफ बॉन्ड यू रिप्लेस इट विद पोर्टफोलियो. दैट्स इट. चलिए ये क्वेश्चन करिए. जस्ट डू दिस.
So what is happening? Consider an 8% bond with a full price of this and yield to maturity of 9%. Estimate the percentage change in full price of the bond for 30 basis points increase in yield to maturity. यानी आपका yield to maturity 30%, 30 basis points बढ़ रहा है. Assuming the bond duration is this and its convexity is this. So duration में आप changes लेके आइए sir. Duration effect कितना हो रहा? Yeah, annual Minus this thing, 2.826%. Correct? bond duration into Correct? 0.0. Okay, Yeah. fine. क्योंकि जब ये इंक्रीज होगा तो आपका बॉन्ड का जो प्राइस है वो डिक्रीज होगा. फाइन. कॉन्वेक्सिटी इफेक्ट क्या हो रहा है? 0.5. You have to take half annual convexity and yield to maturity whole square because that's the formula. Okay, that means Mhm. I already told you, if you want to see the complete change in the bond price, change in full bond price, that will be a combination of duration and convexity. Correct? Convexity, yeah. ड्यूरेशन Complete, कॉन्वेक्सिटी yes. दोनों में कॉम्बिनेशन होना है. सेट ना सर? Yeah, yeah. तो अभी हम लोगों ने कॉन्वेक्सिटी कैसे फाइंड करना है वो देख लिया. ड्यूरेशन ऑलरेडी वी नो हाउ टू फाइंड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला. ओके, तो ड्यूरेशन ये है और कॉन्वेक्सिटी ये है, दोनों को कंबाइन करिए. -2.753%. करेक्ट? Okay. So the expected change in the bond price is this. Okay, but convexity effect ये annual convexity by 2 क्या है? सर यू हैव टू टेक एवरेज, हाफ लेना है वहां पर फॉर्मूले में. Okay. That's what. ठीक है. Actually, I am telling you, by taking account of both duration, that is the first order, and convexity second order. I told you it's a first order derivative, second order derivative. We can Second improve an order. estimate of effects of change in yield on a bonds value. मतलब अगर आपको बॉन्ड के प्राइस में चेंजेस क्लियरली मालूम करना है तो ड्यूरेशन और कॉन्वेक्सिटी दोनों को लेके चलना पड़ेगा. तो दोनों को हम लोगों ने इंकॉर्पोरेट सर किया. YTM स्क्वायर कैसे किया अपन ने? कौन सा? YTM स्क्वायर. Second order derivative. आपका yield to maturity ले लो ना. इसमें yield to maturity क्या है आपका? डिफरेंस लेना है. डिफरेंस 1 स्क्वायर 30 बेसिस पॉइंट्स हो गया. नहीं, 1 स्क्वायर करना है आपको उसमें. एक सेकेंड ठहरो, मैं कैलकुलेट करके बता. हाफ annual convexity is This will be 6.833. Then 30 basis points. it will disconnect now. एक सेकेंड से मैं कर रहा हूं. हमारा 9% हो गया. basis point increase 9 1. So what is the convexity? Actually इधर हमारा convexity का value 6.833. Okay, so 0.68833 into 0. सर 68.33. हाँ वो 68.33 है. इससे पहले हम 78 थे. हमारे को 0.01 आना. 0.01 into 0.01 करे तो 0.0001 होता. और यहाँ पर 30 बेसिस पॉइंट का चेंज है हमारे पास.